IEEE. He also got 2 patents. Now I request Dr. Amit Ojha sir to please start the session. Can you hear me? Yes, sir. Okay. So good afternoon to all of you. Thank you very much, the management of SISTec, for giving me the opportunity to deliver expert lecture, and to the coordinator for organizing this ATAL funded FDP. So the idea of the ATAL, because I am also affiliated with the ATAL, the idea was like that. What they want is the interaction between the faculties and experts, and so that you can explore opportunity in your field. That is the idea. When they introduced, after that, just Corona started, then they went for online. Now they have already started for offline. So they are more interested in offline organization of this FDPs, basically for faculty development programs. And this they are required to interact the faculty members of different institutes. What are the opportunities, or what are the research avenues and the teaching methods that are associated with their institute, so that we can just exchange their views and what you think about that. That is the idea. So today I am here. I don't know, the last time I was also decided, remember this is the same hall. I was here and I don't know what the lecture was that. But the relevant topic, accurate topic, maybe the lecture was like this application of the converters in earlier generation. But today I'll just try to include some more aspect. Or recently there's one project that we have got, and that is also based on this multi-level converter and early generation. So we discuss about all that thing. And first of all, you guys are from engineering background. How many of you are related with the power electronics? No one. A power system? You are. Others? Power system. So basically, generation. Conventional source of energies, we are running out of it. So in near future, we are not going to use that sources right now, what we are using right now. And the second thing is that we have to think substitute of that conventional sources, like solar energy, wind energy, or fuel cell. Like these are the some examples where we are targeting for just to include these sources in our generation. Basically, RES means for renewable energy source based generation. See, first of all, RES means renewable energy means there, which is available naturally in our environment. Or naturally, we can use for generation of electricity. So what is that? That is the RES. Now, why and how? These two questions that we have to answer, so that we can implement that particular idea in our real-time world. So why? These are some reasons why we are talking about RES-based generation. Maybe the rising electricity demand, yes, so one of the reasons. These are the subtopics. Distributed generation. Now we are all talking about, since last 2 decades we are talking about distributed generation. This may be one of the reasons for going RES-based generation, or shift toward the clean and renewable resources. This is the big point where we have to discuss, or we have to give attention that inadequate availability of domestic coal or domestic natural gases, their location. See, difficulty in obtaining materials from coal mine. That location is a very big issue. अभी coal mine वाला भी mine वाला भी सब भी हुआ है. Maybe a coal mine होगा वो. But like same thing, just these are the issues with the coal mine. Adequate fuel supply agreements for the coal, yes, issues are there, and
you can understand the government policies and government ways to deal with such issues may be an issue for our generation and purification of the coal mines. These are some issues related with our conventional sources. So this is why, and this is the reason of why we are going for early generation. This is the scenario. Maybe I have to put it. So these are the some data related with the how around 375 gigawatt what we are generating. This is total installed capacity in India, out of which wind power is around 37. So this data is up to 2020 but 22. Maybe Up to which year? 22, 23 होगा. अच्छा. 6 months back का होगा. इसको अपडेट होना चाहिए. फिर भी आपको you'll get in the renewable energy sources. नहीं सर मेरे पास और पीछे का है. In that wind, yes, we are doing good wind, but now solar has come up. Now solar has become one. मैंने अपडेट नहीं किया है इसको. Anyway, the solar is around 32.62 gigawatt. Biomass and other sources like small hydro. Hydropower plant is also there. They are considering in AICTE. Small hydro. So this is all total about 87.02 gigawatt. Around 20-25% is from AICTE. Now what we are targeting? We are targeting it must be more than 50%. So that the reserves of the coal will reduce somewhat. And other things, whatever the clearance is required, so many issues with the coal, obtaining the coal from the mines and other things may be relieved. For second, the environmental issues. Clean energy, green energy, like what we are talking about. This is how the solar, because we are talking about solar-based generation. So this is how it is generated. This is solar PV panel. It's nothing but simple diode is there, and just receive the electricity. So output was a DC. But this solar PV is current source or voltage source? This is very some questions they will ask you some. अभी हमें पता ही नहीं होता. हम बहुत बातें करते हैं. We always talk about solar PV ये है वो है. But we have two type of sources. Solar voltage source or current source. Both are sources. Why? It is directly converting the irradiance level into current DC. हाँ बिल्कुल ठीक है. But क्या इसको current source बोलते हैं? It's a current source. It's not a voltage source. It's a current source. Yes, it is a current source. And what we are doing, what is solar energy do? Electrical. So how it's work? Simple logic. This is the area where we are now. We are doing right now. अपन क्या कर रहे हैं ये एरिया है. Means what? We are just having a PV panel strings. From there, current sources से हमने कैपेसिटर लगा दिया. Making it voltage source. अब इसको voltage source बनाना है. इसके लिए कैपेसिटर लगाना है. They will ask such questions in your interviews or in your wherever you go or some bio like that. So, but भाई सिंपल सा फंडा है. रिसर्च में जब आप जाते हैं तो कौन सी चीज कहाँ पे कैसे प्लेस की गई है, you have to justify technically. So why we are putting a capacitor over here? Because we have to make this source as a voltage source. हम इसको voltage source को convert कर लिया. Now, what is the voltage level of panel? 15 volt, 18 volt, 22 volt like that. This is not enough to feed to the grid. If we talk about the grid, what is required? 400 volt. Talk about the standard three-phase supply. 400 volt चाहिए, 230 volt चाहिए. How to do? तो मैं क्या कर सकता हूँ? What I can do is that I can increase the number of panels. मैंने क्या किया? Number of panels को increase कर दिया. Say 3 volt है, 22 volt है, 20 panels है तो 100 volt. But area, sorry, the area you require to install that 3 panels, पूरा area जो आपका वो occupied. This is the one way. Another way is that to increase the voltage. So power noise is an area where you are converting the power conversion.
That one is power electricity, use of power electricity through conversion, using devices. This is power electricity. So what we are doing is that we are actually using the devices, switches, and playing with L and C. मैंने क्या किया, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ L और C का प्ले कर रहे हैं. एनर्जी स्टोर हो रही है तो ट्रांसफर कहीं और कर रहे हैं यूजिंग स्विचेस like that. This is how the things are working out over here. So what the power, the output voltage can be increased to another level or our usable level through DC-DC boost converter. This is an important part. And the DC-DC boost converter, the output will be DC, and what we require is DC to feed the grid. But the output of your inverter will be what? It is a square wave, or in the form of pulses. And any sequential periodic waveform can always be represented as a Fourier series. हम उसको ऐसे Fourier series को represent कर सकते हैं. And that be comprising of what? Three components, like A0, AN and PN. A0 is the constant or DC offset, you can say. A0 function of cosine or BN is a function of sine. When your signal is symmetrical, or it is having a half wave symmetry, then there will be no role of cosine function. A0, AN will be 0. It's a function of sine. So fundamental will be a sine wave. So the output of this inverter will be what? The square wave or pulses, the rate of pulses. But the fundamental will be sine. Now, what we require? We require a sine wave to feed the grid. What we will do? We will put a filter. We put a filter over here so that this filter, what it will do? Filter क्या है? Filter कुछ नहीं है. देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है. आपको L और C को यूज करना है. अभी पैसे फिल्टर की बात. 80% मतलब आपके डिवाइडर. हम पैसे फिल्टर कैसे हम यूज L and C. इंडक्टर क्या करता है? किसी पर्टिकुलर सिग्नल को ब्लॉक करता है और कैपेसिटर उसको अलाउ करता है. यही करता है. भाई इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इनिशियली इट्स एक्ट एज ओपन सर्किट एंड स्टेडी स्टेट में वो शॉर्ट सर्किट अलाउ कर रहा है सिग्नल को. कैपेसिटर क्या कर रहा है? उसको सिग्नल को बाईपास कर रहा है. तो व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट डिजाइन आवर सर्किट सच अ वे दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कैन बी अलाउड और बाईपास, और जो फंडामेंटल उसको अलाउ करना है. तो this is the sort of filter we require, and the output will then again to the transformer and grid. This is how the system works. Of course, we require this control system because it will boost what is the voltage required. Will be taken care of this MPPT and other things. MPPT होगा, MPPT में ही हम इसको कर पा रहे हैं कि हमें कर पा रहे हैं MPPT को ऐड कर. इसको we have to take output सब जहाँ पे monitoring होगी. But again, so many issues are with the LED mode or ये mode, synchronization, so many things are there. It will be done by this control. This is whole idea. This is whole philosophy of this particular system where we are converting the renewable energy source based to the electricity. This is the whole idea. But अभी यहाँ पे issues हैं. Issues क्या हैं? But first, stage number 1, stage number 2, stage number 3. इसको 3 होगी. The 3-stage conversion. Number of stages increases, reliability decreases. This is the basic issue with the PV based generation. अभी यही हो रहा है. अच्छा आप लोग घर में किसी घर में है सोलर PV लगा हुआ है? नहीं लगा. But you must think of it. सोचिए इसको और कर सकते हैं इसको. और देर वो तो हमें क्या करेंगे, पोर्टेबल सॉल्यूशन दे देंगे. पीवी लेके आएंगे, कर देंगे, नीचे एक छोटा सा बॉक्स लगा देंगे. बॉक्स सब कुछ यही होगा. इस बॉक्स में सब होगा, पूरा बॉक्स होगा. ऐसे इलेक्ट्रिसिटी आपके घर को जाएगी. whenever when you are not using electricity, it will fed to the grid. नेट मीटरिंग होती है, इस पे पावर रिवर्स हो रही है, पावर का फीड हो रहा है ग्रिड.
ग्रिड को फीड हो रहा है तो रियल इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी नहीं। अब उसके इश्यूज है बहुत सारे, टर्म्स एंड कंडीशन अभी इसके बारे में नहीं जानते। This is the question of how we can convert of our relationship. The first stage was DC-DC conversion. Here, this is the some topologies. Maybe you must be aware of all these topologies and just gone through in the detail of the program, or maybe you are teaching in the institute. So this is what two types of these these are the basis for classification, asserted, non-asserted. अब इस वाले केस में या talk about this, तो बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका सिस्टम है, it must be isolated with this. Why? Suppose something has happened over here, it should not be diverted to over here, or something happened over here, it should not be diverted. ये कैसे पॉसिबल? या तो हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो आइसोलेशन हो गया। ये पावर इज नॉट ट्रांसफर कंडक्टिवली, इट इज ट्रांसफर कंडक्टिवली। ये एक तरीका ये हो गया। और यहाँ पे इशू क्या है? इशू यहाँ पे ये है कि ट्रांसफार्मर है, इट विल वर्क एट अ पावर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, साइज होगी 3 हर्ट्ज। अच्छा, दूसरा काम भी कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू इज दैट कि हम डीसी-डीसी कन्वर्टर यूज कर सकते हैं जो इन टोपोलॉजी को सपोर्ट करता है, आइसोलेटेड टोपोलॉजी। दीज आर टोपोलॉजीज और नॉन आइसोलेटेड जो हमारी कन्वेंशनल टोपोलॉजी। हम ये भी यूज कर लेंगे यहाँ पे इस वाले केस में, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा रिसर्च में ट्रांसफार्मर लेस सिस्टम, ट्रांसफार्मर है यहाँ पे, इसमें है ट्रांसफार्मर, इन टोपोलॉजीज में है, पर वो हाई फ्रीक्वेंसी की साइज बहुत छोटा है। इसमें है, देखेंगे यहाँ पे ये फ्लाई बैक, फॉरवर्ड, हाफ ब्रिज, फुल ब्रिज, पुश पुल। मैंने ट्रांसफार्मर यूज कर, देखिए सिंपल फंडा है, एनर्जी को बढ़ाना है इसी तो इंडक्टर का यूज तो होगा, विल स्टोर द एनर्जी एंड विल ट्रांसफर द एनर्जी, सिंपल। अब वो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की हो या तरफ डिपेंड्स। तो सो मेनी चीजें हैं इसके अंदर, तो आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। तो बेसिकली अपन जो रिसर्च करते हैं कन्वेंशनल, वो बेसिकली हम ही अटक के रह जाते हैं। मैं आप लोगों को, यदि आप फैकल्टी हैं और इफ यू आर वर्किंग इन दिस वेरी फ्रैंक, आई नो दिस प्राइवेट दिस कल्चर, maybe I have started my career with the AIT Bhopal, switched to Tuba, but also fortunately only have to do it. So I worked at AIT around 1 year, that's 6 months in Tuba, and got the opportunity in MIT as well. Then I just spent more than 3 years over there, more than 2.5 years over there, and got the opportunity back. So वो तो also हो गया, but this scenario is not having a very good picture. आप जितने फैकल्टी भी होंगे यहाँ पे, वो मे बी फ्रॉम शायद उसी कल्चर से, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब तक आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग नहीं होता, आपको टीचिंग स्ट्रॉन्ग। बेसिकली अब इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर की बात करें तो आई डोंट नो, बट अब्रॉड व्हाई दे आर very strong in technology, because first they research, then they teach. But if here we are doing this reverse, we always go for teaching, then think of research. So this philosophy of psychology must be changed. तो मुझे ऐसा लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की थोड़ी बात है, आपको इधर भी काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी तो इधर ही काम करना है, मैं बूस्ट कन्वर्टर यूज करूँ। आपको क्या किया, आपने पीवी पैनल लिया, बूस्ट कन्वर्टर लगाया, जो मार्केट में आपको 50,000 पर किलोवाट के सिस्टम में मिलता है, या 8.5 सब डिवीजन के 50-45 मिलता है, ठीक है। तो वो उसमें ये यूज होगा। आप रिसर्च करिए, उसमें ये इनके बारे में बात करने की कोशिश करिए।
give some other way, उसकी वायबिलिटी भी देखनी होगी कि वो कैसे इंप्लीमेंट कर पाएगा. एनीवे अभी फॉर टाइम बीइंग एक बूस्ट कन्वर्टर ले लिया है, हाउ इट वर्क्स इसमें मैंने आपसे बोला कि देयर विल बी इंडक्टर, central inductor, it will store energy, and in this circuit it will store energy and transfer when it is required, and again start to store energy. This is whole cycle. The switch is on, it will store the energy. The switch is off, it will transfer the power to the load. This is how the voltage can be boosted. Important point यहाँ पे क्या है जिस पे आपको वर्क करना है. MPPT की आपने बात सुनी होगी, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रेनिंग, जिसकी आप बात कर रहे हैं. बहुत वास्ट फील्ड है, सैचुरेशन आ चुका है, बहुत कम. करना क्या नया है वो हमको बता दो, इसमें हमें सोचना चाहिए. हम भी सोच रहे हैं, वी आर आल्सो थिंकिंग अबाउट. जब हमें जो प्रोजेक्ट मिला है उसको इंप्लीमेंट करने की बात कर सोचिए. इंप्लीमेंट वर्किंग होगा, वी डोंट नो, बट वी हैव टू थिंक ऑफ होगा क्यों नहीं होगा. वंस टेक्निकली सॉल्यूशंस आर अवेलेबल, यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशंस 1/0 लेवल का पॉसिबल है. यदि 1/0 का काम खत्म नहीं, पॉसिबल नॉटिफाइड. तो इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यही बोलता है, until and unless you are not getting 1/0, everything is दो वेरिएबल दो इक्वेशन पॉसिबल. सिंपल. दो वेरिएबल इक्वेशन नॉट पॉसिबल. सिंपल सा. इसीलिए ये थिंकिंग आपको लानी पड़ेगी, और ये तभी आएगी जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे. ये ऐसा नहीं कन्वेंशन पेपर मिल गया आपने को, उसे पढ़ा और हमें समझ में आ गया, मैं इसको इंप्लीमेंट कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, और वो हो गया. नहीं, वो तो कराया काम है. उसको पढ़ने समझने का नहीं, समझो कि इसमें क्या नहीं किया उसने जो हमें करना चाहिए. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ. एनीवे, टू कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर. दिस इज वर्क कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज वर्क कैरेक्टरिस्टिक. दिस इज पीवी कैरेक्टरिस्टिक एंड दिस इज आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलैरिटी. नाउ हियर, yes, the generation will depend upon the position of sun, because once the position sun moves from east to west, the irradiation will change, and accordingly the power output of the panel will also change, voltage will also change. Here you can see like that. ये अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे ऐसा हो रहा है. तो हमारे पास लॉजिक ये कहता है हमारा कि क्यों ना हम ये मैक्सिमम पावर है इसको हमेशा मेंटेन करें. अब कैसे मैनेज करें, कर सकते हैं बहुत इजीली. ये पीवी आईवी कैरेक्टरिस्टिक में यहां पॉइंट हो रहा है. ये जो एक लोड लाइन है इसमें रेट नथिंग बट 1/r0. r0 किसका r0? ये पैनल के आउटपुट का. तो कन्वर्टर का r हुआ, ये अगर बात क्या होगा डीसी कन्वर्टर. तो आरएन किसका हुआ है, अभी आया असली बता रहा हूं. तो मैं किसी तरीके से अभी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी हो रहा है, मैं r0 को वेरिएबल बना दूं तो मेरी ये लाइन जो है वो यहाँ हमेशा हो जाएगी. भले भी यहाँ रह जाए, मैंने r0 को चेंज किया, मैंने यहाँ तुरंत शिफ्ट हो, मैंने यहाँ पे रहा तुरंत यहाँ शिफ्ट कर दिया. ये अभी मैं इसको बना पाऊं वेरिएबल, मैं कहां हो जाए. ये देखिए, हमने देखा इक्वेशंस रिलेटेड विद द बूस्ट कन्वर्टर. दीस ऑल आर द मैथमेटिकल इक्वेशंस. तो Rn, ये Rn किसका Rn है, इनपुट कन्वर्टर. जो R0 है इसका पैनल. इट इज नथिंग बट द वेरी इट्स अ फंक्शन ऑफ साइन, sorry, function of B. B is what duty cycle. On off ratio. T on upon total time. Correct? अब ये जो D वाली मैं चेंज कर दूं तो मैं R चेंज करूं, मतलब मैं R0 को चेंज करूं, ये R0 किसका आउटपुट है, कन्वर्टर आउटपुट. इसको हम पूछ रहे हैं. अभी मैं इसको चेंज कर लिया, मैं इसको चेंज कर लूंगा. अभी मैं इसको चेंज करा तो मैं R0 को चेंज करता. तो मेरे अकॉर्डिंगली इट मस्ट बी लाइक दैट कि वो पॉइंट हमेशा मेंटेन होगा.
ये पॉइंट हमेशा मेंटेन है। कल कहीं भी किसी भी लेवल पर काम करेंगे पर मैं किस पॉइंट को मेंटेन कर सकता हूँ। तो ये लॉजिक है। अब इस लॉजिक के लिए सो मेनी मेथड्स आर डिफाइंड पैटर्न ऑब्जर्व सो मेनी थिंग्स वो डिफाइंड है। आपको काम करना है तो ऑप्टिमाइजेशन में काम कर सकते हैं, एआई टेक्निक यूज कर सकते हैं। वो भी अभी करने का पहले आता पे आप काम ये इन्वर्टर हमारा ये लॉजिकल इसमें इशू कहाँ पे आता है? ये इशू दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। अब आउटपुट क्या है? इसका फंडामेंटल क्या होगा? बट इट इज नॉट अ इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? harmonics, a component other than the fundamental. That is why it is having this property. अब सोलर पीवी इन्वर्टर्स ये अपन इसकी बात कर रहे हैं क्या है? दिस इज थ्री बेसिकली ये तीन सेंट्रल इन्वर्टर है, स्ट्रिंग एंड बैकअप इन्वर्टर। इसके बारे में अपन अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे बट हाँ ये भी दिस इज हाउ इन्वर्टर कैन बी क्लासिफाइड। विशाल लास्ट टाइम मैंने प्रूव किया हुआ है उसको स्किप करेंगे। मेरा मेन लॉजिक ये होगा रिसर्च में रिड्यूस काउंट मल्टी लेवल की बात करते हैं। अब दिस इज हाउ द क्लासिफाइड बेसिकली बीएसआई मल्टी लेवल एंड हाई पावर इन्वर्टर, हाई पावर टू लेवल इन्वर्टर्स की बात हम कर रहे हैं। अगेन सिंपल क्लासिफिकेशन। नाउ सी मल्टी लेवल कन्वर्टर्स come into the picture in 1980 around 1980 around 20-40 years back, but famous नहीं हो पाया। रीजन बहुत सारे हैं। अब 1980s 1960s 70s में मॉसफेट आ गया। मॉसफेट का रिवोल्यूशन स्विचिंग डिवाइसेस में हमने रिवोल्यूशन दे दिया। क्योंकि हैरेस का इशू क्या था? वो कंट्रोल तो था, सेमी कंट्रोल था, बट इट रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन सर्किट, वो एक इशू था। पर मॉसफेट पे क्या था? सेल्फ कोऑर्डिनेटिंग डिवाइस से गेट बंद दो ऑन, रिमूव कर दो ऑफ, रिवोल्यूशन हो गया। उसको देखते हुए यदि मुझे हाई पावर एप्लीकेशन में जाना हुआ तो व्हाट इज हैपनिंग कभी बताऊंगा मैं आपको डील में। देखिए क्या हुआ, डिवाइसेस हैं हमें यूज कर लेंगे हाई करंट रेटिंग, हाई वोल्टेज रेटिंग, और देयर इज अ चांस कि वो कभी भी फेलियर हो जाए क्योंकि स्विचिंग होना ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, और इस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ एट दैट पर्टिकुलर पावर रेंज तो क्या हुआ आपका स्विच ऑफ फेलियर हो जाए। तो ये हमारा कन्वेंशनल है टू लेवल और ये हमारे मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या होता है? व्हाट इज हैपनिंग इन हाई पावर एप्लीकेशंस, वी कैन अफोर्ड टू यूज मीडियम पावर डिवाइसेस। So there, same performance you can achieve with this type of system. तो ये उस समय ये इंट्रोड्यूस किया गया था, बट क्यों नहीं उस समय हुआ इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, ये एक सिंपल एज ब्रिज है। एज ब्रिज में क्या हो रहा है? सी ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इसका आउटपुट क्या होगा? अभी ये दोनों स्विच ऑन है तो आउटपुट लगता है इसमें भी लगेगा। आउटपुट will be VDC। ये दोनों ऑन और ये ऑफ है, माइनस VDC, करेक्ट? क्या हुआ आपको? ये आउटपुट जिसके बाद बात है VDC माइनस VDC बना। अब ये ऑन है, ये दोनों ऑफ है, इसके बाद जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? कितना ऑपरेटिंग वोल्टेज हमारा VDC है, इसके बाद वोल्टेज कितना होगा? कितना होगा? 2 VDC नहीं होगा, 2 VDC नहीं होगा। देखो सिंपल फंडा है, VDC तो खुद ही वोल्टेज है और वोल्टेज और VDC यहाँ भी तो हो रहा है, दोनों मिला के इसके अक्रॉस वोल्टेज नहीं बनाएंगे। किरचॉफ का लॉ लगा, वोल्टेज स्ट्रेस कितना हुआ? अब उस स्विच को उतना वोल्टेज स्ट्रेस करना पड़ा। VDC एप्लीकेशंस के लिए है वो, बट डिजाइन क्या होना चाहिए? रेटिंग कितनी थी? 2 VDC। ये इशू, दिस इज द इशू। वोल्टेज स्ट्रेस हमारा इशू है, एक बड़ा इशू था उस समय होगा
अभी भी है, अभी 2 लेवल यूज कर रहे हैं, ये एचबीसी यूज करता है, बट ये इशू है। तो मैंने क्या किया, अपन ने क्या किया, स्टडी करी, हमने देखा कि हाँ स्ट्रक्चर है, मल्टीपल स्ट्रक्चर। तो हमने क्या किया, 2 एचबीसी को जस्ट वी हैव क्रिएटेड इन कैस्केडेड, जोड़ लिया हमने इसको। अब हाउ इट वर्क्स, सी इसका इंटीजर आउटपुट होगा, इसका इंटीजर आउटपुट होगा, उसका कैस्केडेड होगा। सेल 1 की सेल 2, ये है सेल 1 का इंडिविजुअल आउटपुट और ये सेल 2 का इंडिविजुअल आउटपुट, और दिस इज कैस्केड। अब ये विड्थ जो है ये हम चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डी ड्यूटी सेट ऑन ऑफ ऑफ चेंज करना, चेंज कर सकते हैं। तो वी कैन गेट लाइक दिस ऑफ वेव। अब देखिए ये वेवफॉर्म प्रेफरेबल है कि ये वेवफॉर्म, ये वाला मोर क्लोज टू साइन है, बस मींस फंडामेंटल के पास में, मींस हार्मोनिक कंटेंट विल बी लेस। इधर स्थिति खराब। अच्छा आप घर में कभी आपने ऑब्जर्व किया इन्वर्टर तो नहीं करना, लाइट चली जाती, चलिए कहीं चलता तो हमें की शॉर्ट आती है, क्यों आती है? हार्मोनिक्स मोटर फंडामेंटल के अलावा उसमें से रोटेटिंग कर स्पीड और वो स्पीड को रेगुलेट करता है। सर इसमें हमने 2 VDC को अवॉइड करने के लिए 8 स्विच रखे। हाँ वही तो, इसमें आपका रिसर्च कहाँ पे जाए, बस उस VDC के लिए हमें 8 स्विच, अरे यार नहीं तो ज्यादा तो हमें रिड्यूस हो गया, रेटिंग कम करना है बस इसलिए। रेटिंग कम करना बहुत इशू है पूरे, लेकिन स्विचेस बढ़ाने से कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीज हो जाएगी। बट जब से IGBT मॉसफेट टेक्नोलॉजी का आ गया है, SiC बेस्ड डिवाइसेस आ गए, तो हमारी काम आसान है, कई तो रेट बहुत कम, प्लस इसमें कंट्रोल बहुत आसान है, कंट्रोल जो है इसका कंट्रोल बहुत आसान है। गेट बस को दो हटा दो, कुछ भी नहीं करना। इसी 1980 में वो ये स्ट्रक्चर सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बिकॉज जो आप बोल रहे हैं पहला क्वेश्चन, अरे कैसा पागल लेवे ने दिया, लेवे ऐसा पागल जो काम 4 स्विच में होता है और तुम 8 में दे रहे हो, क्या फायदा? मेरे प्रोडक्टिविटी होगी, हम फिल्टर लगा लेंगे, हम फिल्टर लगा लेंगे यार, इसमें हमने एक फिल्टर लगा लिया तो वो इससे अच्छा हो जाएगा, इधर सी में लगा देंगे, ये सब बोला क्या? और स्विचेस लाभ महंगे, आज IGBT जो है वारंटी का कितना मार्केट 1200 वोल्ट 68 है, उस समय वो 2-3 हज़ार का मिलता हुआ जाए 4-5 हज़ार, अब तो क्या बताओ मोटर 60 रुपीस का आता है, 600 वोल्ट 30, सी द डिफरेंस, इसलिए हम बात करते हैं। एनीवे ये दिस इज हाउ। अब ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है यहाँ पे 2 VDC, अब वोल्टेज सोर्स कितना होगा ओनली VDC,